Yeah, so hello everyone, and today I am very proud to introduce with Dr. Pratyush Tiwary, a very amazing rank holder, rank 42 in the INI-CET November 2022. So heartiest congratulations, Pratyush. Thank you so much, ma'am. Thank you. So how are you feeling? I'm feeling very happy, ma'am. Feeling very elated. सोचा नहीं था ऐसा तो सोचा नहीं था. जी So what was your first feeling after the exam? एक पता है क्या होता है जो पेपर दे के आता है उसे पता होता है. ma'am, after the exam I felt that the questions were like more around the basic concepts. ऐसा कुछ हाई-फाई नहीं पूछा था एग्जाम के अंदर. So and I thought that my exam had gone well. So ऐसा ही था, मैम. ओके, तो कुछ बताओ कहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी? व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी? Ma'am, I joined Bhatia in third year during my MBBS days. So during third year, I focused on first, second, and third year subjects. उससे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी हेल्प हुआ. उसके बाद फिर फाइनल ईयर के टाइम पे मतलब कोविड हो गया था, तो उस टाइम पे लाइक लाइव फेस टू फेस क्लासेस नहीं होती थी. तो वी हैड द क्लासेस ऑन वही ऑनलाइन क्लासेस. एंड देन ड्यूरिंग माय इंटर्नशिप, मैम, आई ट्राई टू लाइक स्टे इन टच ताकि चीजें भूल ना जाऊं. आई यूज्ड टू सॉल्व एमसीक्यूज मोस्ट ऑफ द टाइम. बट वही फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आई डिड नॉट गेट अ गुड रैंक. उसके बाद मतलब नीट में मेरी रैंक, इफ यू डोंट माइंड, कैन वी मेंशन योर फर्स्ट रैंक? yeah, my INI-CET rank during the first attempt was 7,000 and NEET was 9,099. So to interrupt here, actually why I asked you to tell, because some people have not got such a good rank this time, Pratyush, so they should not be demotivated. Pratyush Yeah, has ma'am. done amazingly well from 7K to 42. So I think everybody should get some message from this that you can do well, right? हाँ जी, मैम. Yeah. तो मतलब एवरीवन लाइक इट्स अबाउट आइडेंटिफाइंग द शॉर्टकमिंग्स कि पिछली बार जो नहीं हो पाया वो इस बार करेंगे. लाइक व्हाट इज द बिग डिफरेंस. तो वही पिछली बार मेरी इंटर्न लाइक माय इंटर्नशिप वाज वेरी हेक्टिक. आई लाइक बेयरली मैं वापस आता था हॉस्टल और बस सो जाता था बिकॉज बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बचती थी पढ़ने के लिए. तो देन आफ्टर माय And you were इंटर्नशिप, having a hectic internship. Pratyush is from Bangalore, and that college is having very hectic duties. Yeah. या मैम. तो फिर मैं वापस आया. देन आई थॉट कि ठीक है, वी हैव लाइक 4-5 महीने का टाइम है, आराम से पढ़ते हैं एंड हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. सो या तो उस टाइम पे आई जॉइंड भाटिया का TND एट दैट टाइम. And during TND, my like one week used to have one subject. So my focus would be that in that 1 week, I would finish off my notes completely and do at least the last 5 year previous year questions. And then TND के जो discussion होता था उसके अगर मेरे को कोई extra point मिलता था, then I had a separate notebook for each subject. If I had any extra point from that TND, I would write it down in that notebook. Okay. So yeah, हाँ जी. So did you made it a point that you will study these many hours per day, or did you made some goal that I have to read this much? It was qualitative or quantitative? मैम, इनिशियली तो इट वाज क्वांटिटेटिव क्योंकि देयर से ना लाइक इनिशियली, और दिस वाज अ प्रॉब्लम दैट आई आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग माय लास्ट प्रिपरेशन आल्सो, दैट मेरे से गोल्स बनते ही नहीं है उस तरीके से कि मेरे को इतना पोर्शन खत्म करना है इतने टाइम में. तो आई यूज्ड टू थिंक दैट एवरी सिंगल डे आई विल स्टडी दीस मेनी आवर्स. और वो कितने आवर्स होते थे? इनिशियली मैम आई स्टार्टेड ऑफ विद लाइक 8 hours a day. मतलब उसमें MCQs एंड लाइक नोट्स बोथ इंक्लूडेड. देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 10 to 12 hours में खींच लेता था आराम से. एक बार आप उस मोड में आ जाते हो, देन देयर इज लाइक नो प्रॉब्लम. एंड आई आइडेंटिफाइड ऑल्सो वेयर एग्जैक्टली मेरा टाइम जाएगा, वेस्ट कहाँ पे कर रहा हूँ मैं टाइम. तो जैसे यूट्यूब वगैरह पे काफी टाइम वेस्ट कर देता था, तो आई डिलीटेड यूट्यूब एंड ऑल ऑफ दैट. ओके, तो यू फील कि ऑन एन एवरेज अगर हम 10+ hours डेली देते हैं, सो दैट इज अ फेयर डील? हाँ जी मैम. आई थिंक लाइक अगर 12 hours लेके चल रहे हैं तो उसमें से डेडिकेट फ्रॉम डे वन, डेडिकेट सम, एवरीवन शुड डेडिकेट सम टाइम टू MCQs, like 2 hours maybe in the starting. And then as you proceed with your preparation, you should dedicate more time to MCQs and less time to the revision. That's what I feel. That's what I did also. All right. So what were the major challenges that you faced during the preparation? Like you prepared initially also, and then you had an amazing journey from 7K to 42. So what was that major thing that you crossed over in this journey?
Yeah, ma'am. So the first, like during my first preparation, I did not know this one thing, which I think has been my motto for preparation this time around, which is that I planned my revision for the last 15 days. Like I thought कि अभी जो मेरी preparation चल रही है, it should only aim at my revision during the last 15 days. That whatever I'm reading right now, somehow Mhm. I should boil it down to maybe like some few key points or important things to remember that I should be able to revise them in the last 15 days. बिकॉज मैम मेरे को ऐसा फील होता है अगर लास्ट 15 डेज में आप एक बार स्पेशली INI-CET के लिए अगर आप प्रीवियसली आज टॉपिक्स देख के चले जाओ एक बार देन योर एग्जाम इज गोइंग टू गो वेरी वेल दैट्स व्हाट आई फेल्ट और मतलब मैंने सीनियर से भी बात करी थी दे हैड आल्सो सेड द सेम थिंग सो आई डिसाइडेड टू फॉलो दैट थिंग सो दैट वर्क वंडर्स फॉर मी एंड आई फील कि मतलब देखो बहुत सारे सोर्सेज होते हैं देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन आउट देयर आई फील दैट एवरी स्टूडेंट शुड ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट देमसेल्व्स टू लाइक कि ठीक है ये पहले पूछा हुआ है दीज आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दैट्स लाइक एंड मे बी लाइक +10%. उससे ज्यादा ना तो वो एग्जाम में पूछते हैं ना याद करने की जरूरत है और फ्रैंकली होता भी नहीं उतना याद लाइक आई नो माई कैपेसिटी एंड आई जस्ट वांट टू प्ले टू माई स्ट्रेंथ्स दैट्स इट. Okay, so limitation of sources, sticking to one source is यस important. मैम. Yes. या So, what do you think that what are the major subjects that you had to focus on? Like we have to study all 19 subjects, but what या were the main subjects they which take core of the time? मैम आई फील कि जो बेसिक्स साइंसेस लाइक प्री एंड पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स आई फील एवरीवन शुड डू थरली क्योंकि उससे जो आगे क्लिनिकल सब्जेक्ट्स है उसका बेस मिल जाता है आपको एंड देन टू रिवाइज क्लिनिकल सब्जेक्ट्स टेक्स लेस टाइम आफ्टर दैट. Then specifically from जैसे in final when we talk about final year subjects तो I think कि basics वो ज्यादा पूछते हैं especially in INI-CET they only ask basics like surgery में trauma breast endocrine these are the things that they ask. And so far as मतलब जैसे ENT opthal में तो especially मैम आपको पता है like they give images and they ask मतलब it's identification is what I have felt कि they'll give that या फिर risk factors those kind of things. So I feel ki anat, physio, biochem, and path, pharma, and micro are like the most important. Then like you should focus on all the other clinical subjects. Okay, so did you feel that the topics that were asked in the paper, they were familiar from the notes that you prepared in the classes or that was covered in the TNT, or there was something that was new or beyond? मैम मतलब बहुत सारे familiar थे. I would say 95% of the paper is always like from the same topics that they keep asking. Rest 5% will always be different. और उस पे अपना like there's no point in breaking your head over the last 5%. Like you should prepare for the 95%. And those are the topics which they keep asking again and again. जैसा मतलब I told you मतलब surgery के अंदर trauma से ही questions थे most of them. Breast was also asked. So these are like some topics which everybody knows are going to be asked. So बस वही trick है that you remember these topics till the last day. That's it. So the topics that were taught in the classes that you attended the classes and the TND, they were well taught and yes ma'am. were Like thorough we on the topics. during my TND what I felt one thing I really liked like the सारे भाटिया के teachers they did the same thing which was like in the if let's say there are 50 questions in TND that would ensure that you are discussing like not only the questions but also the options and with the options you are discussing all the related topics. तो उससे आपका like within a short span of time your entire subject का एक revision हो जाता है उसके अंदर and you also get to know what is important in what topic. क्योंकि हर टॉपिक के बारे में यू डोंट हैव टू नो इन एंड आउट. हो सकता है एक टॉपिक के अंदर आपको सिर्फ 3 या 4 चीजें चाहिए हो. सो TND वाज लाइक वेरी यूजफुल इन दैट वे. And what were your favorite subjects? You attended the classes? हाँ मैम माय फेवरेट सब्जेक्ट वाज मेडिसिन. मेरे को थमीम सर की क्लासेस बहुत ही ज्यादा यूजफुल लगी बिकॉज लाइक ही टुक अ लॉट ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड मतलब जैसे किसी डिजीज के अंदर लाइक ही इज टेलिंग अस द फार्माकोलॉजी आल्सो पैथोलॉजी आल्सो दैट इज वेरी यूजफुल. Like a मतलब legend हाँ of medicine. हाँ Yes. हाँ सही कह रहे हो. एंड then ma'am we had जैसे in TND specifically I thought Thamim sir की classes were very high yield. Then even surgery classes were very high yield. जो सर ने topics discuss करे they were very specific. मेरे TND में first class was opthal only. तो हाँ तो that was also very high क्योंकि ज्यादातर उसके होता अंदर है क्योंकि मैं ही ज्यादातर ओपनर होती हूँ तो वो ये चीज मुझे सब जगह सुनने मिल जाती है. यस. तो that was also very high yield क्योंकि उसके अंदर like
there were some questions. Most of the questions I thought were from PYQ के हिसाब से ही questions थे in all the TNTs. So I thought कि everyone was it was a great TNT session सबका ही. ऑल राइट. तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रत्युष, कि जैसे हम लोग डिस्कस भी कर रहे हैं कि पीवाईक्यूज एंड पीवाईक्यू टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड स्पेशली जब हम INI-CET की बात करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. तो कितना परसेंट दोगे? ये मैंने पॉल भी क्रिएट किया था अपने DBMCI ग्रुप पर, कि क्योंकि आगे जब स्टूडेंट्स इससे प्रिपेयर करते हैं तो आई थिंक उनको एक रेफरेंस रहता है कि हम अगर पीवाईक्यूज पढ़ लेते हैं तो हमारा कितना परसेंट तैयार हो जाता है, 10 to 20%, 20 to 30%, 30 to 40 या 40 to 50. So which one will you choose? Ma'am, honestly, I think if you just do PYQs, तो at least 60 to 70% तो हो जाएगा. 60 to 70. I feel the PYQs and the options which are given, provided कि what मतलब source you are PYQ using. topics also you are including ना, PYQ and PYQ topics से अगर पढ़ लेते हैं तो अच्छा. Because I feel, especially in INI-CET, there is this thing wherein at the end you will be confused about two options. Out of the 4, 2 options will be the ones in which you are confused. So to differentiate those 2 options is the entire game in INI-CET. And वही दो topics भी important होते हैं. So if you are able to differentiate between those 2 options, that's great then. वो तो है ही, क्योंकि पता है हमेशा तुम्हें याद भी होगा, मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ कि 50-50 लाइफलाइन बहुत आसानी से मिल जाती है. इट्स ऑलवेज वेरी इजी टू डिफरेंशिएट द टू एंड टू रूल आउट द टू ऑप्शंस. आखिरी गेम जो होता है वो 2 ऑप्शंस के बीच में ही होता है. अगर किस्मत अच्छी होती है तो आप सही वाला लगाते हो, कभी कभी खराब भी होती है तो आप सही लगाते लगाते भी गलत वाला लगा देते, ऐसा हो जाता है. तो मतलब यू आर 60 to 70 पे जा रहे हो, मतलब मोर देन 50% जो है वो डेफिनेटली. मेरी प्रिपरेशन का कोर तो वाज PYQ एंड व्हाटएवर टॉपिक्स दैट दे हैड प्रीवियसली आस्क्ड, और जो ऑप्शंस में थे मैं उनको पढ़ लेता था ओपन की. अगर कुछ नया आएगा तो इन चारों ऑप्शंस में से आएगा जो उन्होंने पूछा था. ओके, तो इसका मतलब अगर हमने नोट्स पढ़े हैं, क्लासरूम नोट्स हमने तैयार किए थे, योर सोल प्रिपरेशन वाज भाटिया क्लासेस, TNT भी किया, अगर हम ये करते हैं, बिकॉज यू टोल्ड मी कि हम लोग सारे TNTs, PYQ एंड PYQ टॉपिक्स से रेफरेंस ही बना रहे हैं, तो आई थिंक वी कैन गिव अ गुड पेपर INI-CET, वी कैन स्कोर वेल स्टिकिंग टू दिस वन, राइट? ग्रैंड टेस्ट, व्हाट अबाउट द ग्रैंड टेस्ट, कितना फ्रीक्वेंटली दिया था? Ma'am, initially I used to give 1 in 2 weeks, but then 2-3 के बार के बाद I started giving once a week, because I feel even starting में when जब मेरा syllabus नहीं बहुत maybe 4 या 5 subject मैंने सही से करे थे, even then I used to give 1 GT a week, because it's about getting into that mindset. Because I feel there will always be. mindset कैसे बनाया था? क्योंकि प्रत्युष बहुत सारे students होते हैं ना, they start feeling low when they start getting low GT score. तो what was your mindset? See, I always used to tell myself that at the end of the day, see, how you are getting the MCQ correct is, nobody is going to ask you how you got this MCQ correct. If you go to answer a question, and even if you are able to rule out 3 options and you choose the right one after ruling out the other 3 options, that is the same as you knowing the right answer in an MCQ exam. So you have to, I used to just give initially जब 4-5 subjective हुए थे, I used to give GTs and just try to rule out the wrong options. That's it. कि अच्छा ठीक है, there are 4 options, I know at least that it can't be these 2. Now in the remaining 2, which one seems more likely? That approach is what I wanted to develop in the beginning. क्योंकि मेरे को पता था एक बार जब मैं 19 सब्जेक्ट पढ़ लूंगा तब तो फिर हो ही जाएंगे ना MCQs. But to answer the questions to which you don't know the answer. स्कोर आया तो बुरा लगा कि अगला पेपर ना दूं, अगला टेस्ट ना दूं अब? हाँ मैम, वो तो लगता ही है, सबको ही लगता है, बट वही था that I used to force myself. I used to get up in the morning and मैं सोचता ही नहीं था किसी के बारे में. I would sit down to give the GT, and then once you start the GT and maybe you have given 50 questions, then you are in the rhythm कि now तो you have to give the entire GT. तो इतना सोच I would suggest to everybody, don't think so much, just start. Don't think twice, but start giving the test. Yeah, exactly. Okay, so one best message that you acquired from this journey and that you would like to pass on to the juniors and the future aspirants? Hard work is very important. There's no substitute for hard work. Just keep working hard and you will get there.
Yes, and you are a perfect example. You kept on working hard, and the stars are with you today. Thank So you, ma'am. once again, heartiest congratulations. Like a great journey, amazing Thank you so journey, much. and you have all made us very, very proud. And we wish you that you get the best of your dream branch, and you get the best results in your future endeavors also. Thank you so much, ma'am. Thank you. God bless you.